everyone! As recently I have completed 1 year on YouTube, so I thought of sharing my personal financial journey with you so that you will know what exactly I am planning to do and how. My investing style is directly linked to my financial goals, which is, like many other Indians, that is to attain financial freedom by the age of 40. इस गोल को अटेन करने के लिए I focus on two things. First one is money inflow and expenses, and the second one is investment. मुझे लगता है कि 40 की एज में रिटायर होने का मेरा प्लान अचीवेबल है एंड उसके लिए आई एम ऑलरेडी वर्किंग। इस गोल को अचीव करने के लिए आई नो टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. आई नीड टू हैव सम गुड इन्वेस्टमेंट एंड नीड टू जनरेट मोर इनकम सोर्सेज, एंड उसी के साथ मेरी एक और चीज़ है जो मैं ध्यान में रखती हूँ, दैट आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन माई लाइफ स्टाइल इवन आफ्टर रिटायरमेंट। इस गोल के अचीवमेंट के लिए मैंने एक स्ट्रेटेजी प्लान की है जिसमें मैं ऑलरेडी वर्क भी कर रही हूँ, and that is to increase my income level and trying to build portfolio which can help me generate more return. Now the question is, what exactly I am doing? Let's talk about the first lever, which is income. Currently I am working in MNC. This is my primary source of income and मेरा गोल है बहुत ज़्यादा सिंपल कि अच्छे से काम करो, प्रमोशन लो, ऑन सोर्स अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं जिससे आपको, एंड इससे योर इनकम विल ऑल्सो इंक्रीज. The second thing is I am trying to generate multiple sources of income and उसके लिए I am working on different businesses. और मेरा एक simple goal है which is to grow my income each year by a minimum of 20%. Now we will talk about my second lever, which is investment. As my aim is aggressive, so my investing style is moderate aggressive. When I am saying moderate, it means 30% I save for backup or assured return in instruments such as government bond, PPF and some other safe investment. Out of remaining 70%, 40% I invest in stocks, 20% in mutual fund and 10% in various investment in crypto, real estate linked investment. Since my aim is to grow income 20% every year, इसकी वजह से मेरा जो investment portfolio है that is also increasing proportionally. I know many people leave their job and then work on different things, but मेरा मानना है कि everything takes time, and जब आप जॉब छोड़ देते हैं तो this create unnecessary pressure on you. So if possible थोड़े टाइम जॉब के साथ एक्सप्लोर करके देखो, and if you think कि यही चीज़ है जो आप करना चाहते हैं, then you can take that risk. Now I would like to talk about how confident I am on my retirement plan. एक्सटर्नल फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स का तो मैं कुछ कर नहीं सकती, बट अगर चीजें प्लान के हिसाब से चलती हैं तो आई होप आई विल अटेन माय फाइनेंशियल गोल, एंड इस मेजर गोल को अचीव करने के लिए आई विल मेक सम शॉर्ट टर्म गोल्स आल्सो, जिससे ये पता चल सके कि वेदर आई एम ऑन ट्रैक और नॉट. उसी के साथ अपने एक्सपेंसेस को बेटर मैनेज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विच आई एम करेंटली डूइंग. If you want to know my stock investment style or my side hustle income sources, then let me know in the comment section. I will create a separate video on that one. But for now, I will take your leave.